Good evening. You're watching Hornbill TV's Primetime. First headlines. Massive violence broke out in France as protesters blocked roads, set ablaze and were met with volleys of police tear gas Wednesday, seeking to heap pressure on President Emmanuel Macron by attempting to give his new Prime Minister a baptism of fire. The Civil Aviation Authority of Nepal has announced that Kathmandu's Tribhuvan International Airport will reopen for operations starting today. The Central Reserve Police Force CRPF is set to take over the security arrangements of the Vice President of India under Z Plus security cover, sources said. The Enforcement Directorate ED has arrested Karnataka's Karwar Assembly constituency MLA Satish Krishna Sahil in connection with an ongoing money laundering case. In a significant boost to regional connectivity in the eastern India, the Union Cabinet has approved the doubling of the 177 kilometers long Bhagalpur-Dumka-Rampurhat single railway line, which spans the states of Bihar, Jharkhand and West Bengal. Now to news in details. The Civil Aviation Authority of Nepal has announced that Kathmandu's Tribhuvan International Airport will reopen for operations starting today. Flights which has been suspended due to the adverse circumstances will now resume following a decision of the Airport Security Committee. Authorities have advised passengers to contact their respective airlines for the updated flight schedules. Travelers are also reminded to carry valid airline tickets and identification documents when arriving at the airport. Massive violence broke out in France as protesters blocked roads, set ablaze and were met with volleys of police tear gas Wednesday, seeking to heap pressure on the President Emmanuel Macron by attempting to give his new Prime Minister a baptism of fire. Interior Minister Bruno Retailleau said a bus was set on fire in the western city of Rennes and that damage to power line blocked trains on line in the southwest. He alleged that the protesters were attempting to create a climate of insurrection. Earlier in the day, Macron appointed Defense Minister Sébastien Lecornu as France's new Prime Minister and tasked him with immediately trying to get the country's factious political parties to agree on the budget for one of the world's biggest economies. Lecornu, 39, was the youngest defense minister in French history and architect of the major military build-up through 2030, spurred by the Russia's war in Ukraine. A long-time Macron loyalist, Lecornu is now France's fourth prime minister in barely a year. A former conservative who joined Macron's centrist movement in 2017, Lecornu has held posts in local governments, overseas territories and during Macron's Yellow Vest Great Debate when he helps manage mass anger with dialogue. He was offered tasks and autonomy during unrest in Golatup in 2021. Legislators toppled Lecornu's procedures. Francois Bayrou and his government in confidence vote on Monday, a new crisis for Europe's second largest economy.
The Central Reserve Police Force (CRPF) is set to take over the security arrangements of the Vice President of India under the Z Plus security cover, sources said. Under the new arrangement, the Vice President will be guarded by the armed commandos of the CRPF with the Z Plus category security cover. The transition follows a verbal order issued by the Ministry of Home Affairs (MHA) to the Central Armed Police Force, which will now be responsible for ensuring round-the-clock personal security to the country's second highest constitutional functionary. The move comes after the MHA issued directions to the CRPF following a fresh assessment of the potential threats. However, a written order is yet to be received by the CRPF. As a part of the layered security protocol, the Delhi police will continue to handle access control, perimeter duties and outer cordon security ring, while the CRPF will be responsible for the close protection duties. Under the new security grids, the Vice President will be provided close protection by the specially trained CRPF commandos who are part of the force light VIP security wing. Sources said that the CRPF may take over the security of the Vice President by today, Wednesday. In a significant boost to regional connectivity in the eastern India, the Union Cabinet has approved the doubling of the 177-kilometer-long Bhagalpur-Dumka-Rampurhat single railway line, which spans the states of Bihar, Jharkhand and West Bengal. The project will implement it at a total estimate at a cost of Indian rupees 3,169 crore. Union Minister for Railways Ashwini Vaishnaw announced that the decision on Wednesday, highlighting the strategic importance of the project in enhancing rail connectivity across the region. Currently, most train services from Bhagalpur to Kolkata run via Malda town and Rampurhat. The approved doubling will allow a significant number of passengers and express trains to travel via Dumka, opening a new and shorter corridor between the South Bihar and Kolkata. The project is expected to reduce travel time, improve punctuality and increase capacity for the both passengers and freight trains. It is also likely to generate employment opportunities during the construction phase and foster economic growth in the region. दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुरहाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी। काफी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। The Enforcement Directorate (ED) has arrested Karnataka's Karwar Assembly constituency MLA Satish Krishna Sahil in connection with an ongoing money laundering case. The arrest was made by ED's Bengaluru Zonal Office on Tuesday night after a day-long interrogation of the legislator who had deposed before the agency earlier that day. Official privy to the development told media that Sahil had been avoiding summons prior to his appearance. The MLA will be produced before the court later today. The move comes at a month after ED's Bengaluru Zonal Office conducted search operations at the multiple locations in Karwar, Uttara Kannada, Goa, Mumbai and New Delhi under the provisions of Prevention of Money Laundering Act
2002 in connection with the case. The raids were carried out on the 13th and 14th August. This operation was a part of the ongoing investigation into Satish Sahil and other persons and entities including Ashapura Menecham Limited, Shri Lal Mahal Limited, Swatik Steels Private Limited, ILC Industries Limited, Sri Lakshmi Venkateshwara Minerals Limited, who were convicted by a special court for MPs and MLAs Bangalore for illegal export of iron ore, fines carried out by the Sri Mallikarjun Shipping Private Limited in conclusion of the other persons and entities. People's Democratic Party (PDP) President Mehbooba Mufti on Wednesday strongly criticized the detention of Doda MLA Maraj Malik under the Public Safety Act as PSA, alleging that the move was diversionary tactic following the recent incident at the Hazarabad Shrine. Speaking to the reporters, the former Chief Minister of Jammu and Kashmir said that to divert attention from the incident that happened in Hazarabad Shrine, on one MLA Miraj Malik was sacrificed. Invoking PSA against an MLA and detaining him shows that the condition of the law and order in Jammu and Kashmir. Mufti urged the Lieutenant Governor of the Union Territory to immediately intervene in the matter. She further warned that the curbing the right to free speech and political expression could worsen the ground situation in sensitive regions. जो MLA है PA से डाला गया है, बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, इस तरह से देखते हैं। देखिए, जो हजरत बल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है FIR दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक MLA की कुर्बानी, इसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक MLA वो भी लगाना, और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तल्ख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए, बल्कि उल्टा वहां जो MLA इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे भी उसके से 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक MLA के खिलाफ PSA लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी LG साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको FIR विड्रॉ कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो MLA डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो PSA तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन
और ज़रा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं या एफआईआर की है वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो है जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें और ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। Stay tuned, we'll take a short break. What is HIV? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. The virus is present in certain body fluids and can be spread from person to person. Welcome back. Moving on with the news, the Centre on Wednesday officially announced the rules and regulations of the Unified Pension Scheme. The Unified Pension Scheme, UPS, is structured pension alternative introduced as an optional pathway within the NPS framework. It was first approved by the Union Cabinet on August 24, 2024 and later notified by the Department of Financial Services on January 24, 2025. The scheme became operational from April 1, 2025 and the Pension Fund Regulatory and the Development Authority PFRDA issued its own set of operational guidelines on March 19, 2025. Union Minister Jitendra Singh said on Wednesday this discussion regarding the welfare of the pensioners was going on for a long time. PM Modi was also of the opinion that elder citizens will play a big role in making Vikshit Bharat by 2047. Keeping this in mind, the simplification of their life, ease of living and unified pension scheme was announced. The rules and regulations related to the same have been officially issued today. सबसे पहले तो मुझे ये बात साझा करनी है, अपने आप में भी बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम सब बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ पेंशन वेलफेयर के सेक्रेटरी श्रीनिवास जी उपस्थित हैं। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी पेंशनर्स को लेकर के, पेंशनर्स के हित को लेकर के, किस प्रकार के विकल्प रहने चाहिए पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे एल्डर सिटीजन्स के लिए, और उसी के तहत काफ़ी विचार करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई बैठकें हुई, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, डेलिब्रेशंस, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये मत था कि जो हमारे एल्डर सिटीजन्स हैं ये देश और राष्ट्र का सरमाया है और विकसित भारत के निर्माण में जैसे वो हमेशा ये आग्रह करते हैं कि प्रत्येक नागरिक का योगदान रहेगा, तो इनका भी योगदान उतना ही अनिवार्य है जितना किसी और का। इनके जीवन का सरलीकरण हो, ईज ऑफ लिविंग हो, उस सब को ध्यान रख करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी, जैसे आप सब मित्रों को ज्ञात है। उसी को लेकर के जो विधिवत नियम और रूल्स रहते हैं उनको आज औपचारिक तौर पर जारी किया गया है। उनका और अधिक प्रचार प्रसार हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। ट्विटर हैंडल्स की, यूट्यूब्स की, फेसबुक की, और उसके अतिरिक्त कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो भी इस विषय को लेकर के किसी के मन में कोई विचार हो, शंका हो, तो ये हमारे एल्डर सिटीजन्स, हमारे जो पेंशन याफ्ता होने वाले हैं, इवन द सर्विंग एम्प्लॉयज़, वो हमारी वेबसाइट्स को भी अप्रोच करें, और उसके अतिरिक्त अगर उन्हें कुछ और समझना हो तो वो विभाग में आकर के रूबरू होकर भी बात कर सकते हैं। सर, टेक्नोलॉजी को
Prisoners broke out of the Delhi Bazaar prison on Tuesday amid mounting protests across the country. Authorities confirmed that the Nepali army personnel attempted to stop them at the prison gate, but the inmates forced their way through, demanding release on the general bail. Reports of the similar jailbreaks have surfaced nationwide, gaining momentum after Russia's Swatantra Party chairman Rabi Lamijani was released from Naku prison earlier on Tuesday. The Nepali army took control of the nationwide security operations at 10 p.m. on Tuesday, imposed restrictions in several areas across the country, including Kathmandu, Lalitpur and Bhagatapur cities, to contain the unrest that continued even hours after Oli stepped down. The Nepal army chief made a statement announcing takeover of the law and order in the evening of Tuesday. That's all for now. For more news updates, keep watching Hornbill TV.